back to my channel, Carpenter VJ. So that was the KTM RC200 2018 version. नए फीचर्स अपडेट किए नहीं हैं टेक्निकली. थोड़ा पैसा निकाल लेता हूँ. वेट अ सेकेंड. GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग. तो बात कर रहे थे KTM RC200 की. बाइक में कुछ अपग्रेड्स की नेसेसरी नहीं है फ़िलहाल. प्रोबेबली 200 सीसी की फेयरिंग बाइक की कैटेगरी में अभी तक की बेस्ट बाइक है ये. सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ अपग्रेड्स इन द बाइक. जो 2017 वर्जन में ब्लैक कलर वाइट कलर की अवेलेबल थी, अभी वो ये साल से ब्लैक कलर में अवेलेबल है. जस्ट लाइक KTM RC390 RC200 ब्लैक कलर में लॉन्च होगी. आई होप KTM 390 एडवेंचर वर्जन भी जल्दी लॉन्च होगी इंडिया में. टेस्टिंग के फोटोज तो लीक हो रहे हैं इंटरनेट पे. एनीवेज मैं मेरी बाइक धो लेता हूँ. आई एम एट द 90 फीट रोड राइट नाउ. Probably the best road in Dombivli. ज़्यादा भीड़ नहीं होगी. तो लेट्स सी ज़रा KTM के शोरूम में जाके आते हैं. RC200 लास्ट वीक तो अवेलेबल थी, मे बी अभी भी अवेलेबल होगी डिस्प्ले में. तो देख के लेते हैं. शोरूम इज़ क्लोज. नहीं भाई चालू. GoPro stop recording. So guys, this is a RC200 black edition. And this one is the old one, RC200 2017 version. The only difference between these two bikes is the graphics. The graphics are the same. Sorry. Okay, the color pattern is totally different. See, this is the white panel on this RC200 black edition. It's totally black. The tank is black. Stickering is totally same. The only difference is that because of the tank is black, this stickering is white over here. On the 2017 version it's black. Technically the bike is same. No any kind of engine specification has been upgraded. In fact it doesn't need on this bike. It's probably the best in 200cc category fairing bike. So this is the difference between these two bikes. The one minor difference is that on this 2017 version its RC written over is black, and over there it's in orange color, and this KTM logo is white in color on the black edition, while over here it's black. So that's the only thing for KTM RC200 black edition. सो गाइस, मुझे वीडियो तो बनाना था RC200 ब्लैक एडिशन का, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे 2017 वाइट एडिशन भी अवेलेबल थी. सो उसी चक्कर में मैंने कंपैरिजन वीडियो बना दिया, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली. अच्छा है, थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई आप लोगों के लिए. सो बेसिकली हुआ गया, जैसे मैं शोरूम के बाहर निकला तो मुझे पता चला कि GoPro की बैटरी डाउन हो गई है. सो दैट्स वाई अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. सो एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए. In case if you want to watch more videos like this, you can subscribe to my channel. It's Carpenter VJ. Also you can follow me on Instagram. My Instagram ID is Carpenter VJ. So see you soon.